and welcome to the Power Book, the keys to power. So I'm going to share this screen. So today we are going to learn about the deep and depth about the gratitude power. And yesterday what we learned about the how it will work gratitude power to using in the our relationships or maybe improve our day-to-day life. Okay, one second. Sorry. So just I'm going to share the screen. And power book is the power only, so it will give the immense power with the simple things, right? So everyone knows that gratitude and everything, but with these simple modifications how we can change our life uh, with the amazing one. So where we are now, love is being alert, it's completed. How to keep your mind is completed. The keys of gratitude, it's finished. Gratitude, the great multiplier, this is also finished. Okay. ఇది ఫినిష్ అయింది కదా మధు. గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ టు లవ్ కదా. లాస్ట్లో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను మ్యామ్. నేను లాస్ట్ మీరు ఎక్కడి వరకు చెప్పారని ఇది ఇక్కడే ఉందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. గ్రీవ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ సెన్సెస్ ఇట్స్ ఆల్సో ఫినిష్. ఓషన్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుండి చదవండి. గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హోమ్. Give thanks for your home, family, your friends, your work, and your pets. Give thanks for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. Give thanks for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet. Give thanks for the transportation you use every day. Give thanks for all the companies that provide you with, please scroll, essential services so that you can live a comfortable life. So many human beings toiled and sweated so that you can turn on a tap and have fresh water. So many human beings gave their life's work so that you can flick a light switch and have electricity. Think about the magnitude of human beings who slaved day after day, year after year to lay the train tracks across our planet, and it's almost impossible to imagine the number of people who did the back-breaking work of making the roads we drive on that form a connecting network of life for the world. In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that it is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, Lutheran pastor. To use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you grateful when you have a good night's sleep? Or do you take those nights for granted and only think of sleep when you have been deprived of it? Are you grateful for your loved ones when everything is going well? Or do you only talk about your relationships when there are problems? Are you grateful for electricity when you use an appliance or uh, flick a switch?
Or do you only think of electricity when there is a power blackout? Are you grateful to be alive each day? Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person, but I did not know what gratitude really was until I practiced it. If I am driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I will give thanks. With my heart, I say, thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for my health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for everything wonderful and good in my life. Be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life because whatever you are grateful for multiplies. Thank you, Madhu. Yesterday up to here we are Thank you. finished. Yes. Yesterday we are finished up to here because we entered in the key of play also. Because just observe yourself, okay, if you are receiving calls from your friends, okay, just observe, or maybe you are calling somebody when you have the problem. Otherwise, you can share both things, excitement, or maybe you are sharing sad things also, means when you need it. So just observe your day and whatever now we are receiving, na, so really what we are giving. If we can compare, na, God has given so many things in our life. Look at yourself. अपना आपको देखना चाहिए एवरी डे हम लोगों को कितना लोगों को ये मीन्स खुला हवा नहीं मिलती है फॉर एग्जाम्पल अच्छा मीन्स ऑक्सीजनेटेड एयर मीन्स थोड़ा अच्छा वाला ऑक्सीजन वाला एयर है इतना सारा पोल्यूशन हो रही है इतना सारा फैक्ट्रीज आ रहे हैं तो भी वी आर हैविंग दिस मच ऑफ मीन्स कंपेयर टू बहुत अच्छा हवा है आप देख लीजिए आपका सोसाइटी में अगर अच्छा विदाउट पोल्यूशन होना है या कंपेयर टू आपको देखना है तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करके देख लीजिए सराउंडिंग आपकी सराउंडिंग एरिया बहुत क्लियर होती है मीन ग्रेटिट्यूड हैव दैट मच ऑफ एनर्जी अगर एक करेगी तो वैसा है पूरा फैमिली कर रहे पूरा सोसाइटी कर रहे तो हाउ वी कैन बिल्ड वन ए ब्यूटीफुल सोसाइटी लाइक फेरी टेल में होती है ना वैसे सोसाइटी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं with the gratitude power. So इतने simple way में explain किया है round about means everything what you are enjoying, what you are experiencing. Maybe sometimes what you are not experiencing, if you want in your future also, can give the gratitude. Okay. And the key of play, yesterday we are entered in this also. So we need to play as a game in our life. हम लोग लाइफ को कैसा लेना है एंड ग्रेटिट्यूड को कैसा अप्लाई करना है एक प्ले जैसा एक खेलने की मोड फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न डांस तो आप फन में सीख लीजिए ना सो योर बॉडी आल्सो सपोर्ट यू इफ यू आर रिजिड ना योर बॉडी डोंट हैव दैट मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पूरा खत्म हो जाती है बट यू कैन गिव दैट थैंक यू एंड यू कैन ऐड सम फन ठीक है और बॉडी किसी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना यू कैन मेक फन योर सेल्फ तो देख लीजिए आपका बॉडी में कितना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है एडिंग द फन फन इन योर लाइफ आप देख लीजिए कितना लाइट अप कर सकती हो whenever something is happening ना in your life or maybe with the situation एक पर्सन ऐसा होगा वो पर्सन बहुत लाइट अप करने वाला आपकी लाइफ में होता है फैमिली मेंबर में भी एक तो एक वैसा होना चाहिए देख लीजिए वैसे तो बहुत ज्यादा फैमिलीज में एक तो एक होता है लाइट अप करने वाला होता है ठीक है अगर वो नहीं होता है ना सब लोग एक जैसा होगी ना तो फैमिली का ये वाला फाइटिंग सिचुएशन होती है इन सोसाइटी आल्सो सेम थिंग सो जितना भी सीरियसनेस से क्या होती है जस्ट वी और नॉट चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस विद द सीरियसनेस ठीक है बट एडिंग द फन वी विल मेक द चेंजेस इन आवर लाइफ ऑटोमेटिकली वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाती है ठीक है लाइफ इज सपोज टू बी फन फन मीन्स ऐसी नहीं है जो आप लोग सोचते हो वैसी नहीं है बट एनी सिचुएशन यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस आपको जो चाहिए ऑलरेडी है तो वाई आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ स्ट्रेस
वैसा वाला फन चाहिए, वैसा वाला लाइट अप चाहिए। सो ऑटोमेटिकली वी कैन चेंज आवर ओन बॉडी सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ। आपका सेल्स जब डर में होती है ना, ठीक है, तो जैसा आप कैसे फील हो रही हो डर का, तो वो एवरी सेल सिंक हो जाती है, पूरा ऐसा वाइब्रेट नहीं होती फूल जैसा, लाइक ए बर्ड जैसा वैसा हो जाती है, मेरा बास के लिए कुछ हो जाएगा, ठीक है, वैसे हो जाता है, पूरा श्रिंक हो जाता है। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर रेडी टू अटैक। मेरे लिए तो कुछ हो रही है। तो कितने एक ब्यूटीफुल वीडियो मैंने 4 डेज बिफोर देखा था, अगर पॉसिबल है तो वो वीडियो मैं शेयर करते, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द फीलिंग्स, हाउ आवर बॉडी सेल्स आर गोइंग टू बी रिएक्टेड व्हेन वी कैन फील हैप्पी, हाउ आवर सेल्स आर वाइब्रेटेड, एंड हाउ दैट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है, बाकी सेल का स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल होती है। बट व्हेन वी आर इन द फियर मोड और मे बी वी आर इन द कंफ्यूजन एंजियस मोड, सो हाउ दैट बॉडी एवरी सेल हैव द कंफ्यूजन मोड। उसका स्ट्रक्चर राउंड वाला ओवल वाला शेप ही नहीं होती है, ऐसा गोलू मोल जैसा वैसे भी हो जाता है। because what we are thinking, what we are creating, that is going to be created in our life. And ये वाला फन ऐड करने के लिए इमेजिनेशन है, वन ऑफ द की है आवर लाइफ में। ग्रैटिट्यूड का और मोर एनहेंस करना है, तो इमेजिनेशन इज द बेस्ट वन थिंग, वन बिग की है। तो yesterday we are finished this line also। ये वाला भी एक स्टोरी था yesterday, ठीक है, एक साइकिलिस्ट का स्टोरी था। उनका तो ओनली 40% चांस है सरवाइव होने के लिए, बट उसने थ्रू द इमेजिनेशन उसका हेल्थ भी अच्छा हुआ था विद इन 1 ईयर। एंड बाद में उसका जो साइकिलिंग कंपटीशन में जाना था, अल्लाह शेजवेंजर, तो वो इतना ओलंपिया में 7 टाइम्स उसका नेम आया था, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सो फ्रॉम हियर मधु, इमेजिन, फ्रॉम हियर यू कैन डू, imagine you want to be a great inventor. Hello? Yes, ma'am. From here. Imagine you want to be a great inventor. Second, third paragraph. Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You are overwhelmed with hallucinations and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucinations, you take control out of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a brighter future, uh, you direct your imagination to new inventions. You build an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind and you use your imagination to check the new invention for wear and tear. Before turning your idea into a physical device, this is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was the alternating current motor, radio, amplifier, wireless communication, fluorescent light, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patented inventions, all of them have been developed exactly this way through the power of his imagination. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein, 1879 1955, Nobel Prize winning physicist. Okay, Madhu, you can Okay. start. Thank you for reading. మధు కోమలి ఏమైనా రీడ్ చేస్తుందా, కోమలి గామి వాళ్ళు? యాక్చువల్లీ వాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్ళారు మ్యామ్. సో క్లాస్ది ఓకే ఓకే ఓకే. ఇవాళ రేపు ఒకవేళ జాయిన్ అయితే రేపు జాయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. तो इमेजिनेशन इज द फर्स्ट ग्रेट इन्वेंटर। इमेजिन के लिए क्या चाहिए, वी वांट जस्ट गिव सम टाइम एंड वी कैन गिव दैट कॉन्फिडेंस एंड वी कैन ब्रेक दैट रूम, जो एक 4 वाला रूम होती है ना, स्क्वायर वाला रूम से
उसको सिर्फ ब्रेक करना पड़ेगा इमेजिनेशन वर्ल्ड के लिए. ठीक है. In meditation also look at yourself when you are doing the first in meditation. We'll observe only under, I mean dark only. But if you are doing the regular meditation, you can observe different types of colors. How many of you observe different types of color? Something will be there when you are closing your eyes. Some light will be there. Any light, but light will be there. Anyone observe? మెడిటేషన్ స్టార్టింగ్ కంటే తర్వాత చేస్తే ఏదో ఒక లైట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిన కొద్ది ఇమాజిన్ ఫేసెస్ ఎవ్రీ వన్ ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. కొన్నిసార్లు వైట్ కలర్ లేదంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ శూన్యం లాంటి కలర్, అది తెలియని కలర్ అది కనబడుతుంది మ్యామ్ ఒకసారి ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ మీతో జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు, సో అంటే స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫోకసింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ యూస్ టు టేక్ టైమ్, బట్ దట్ ఇమాజినేషన్ అండ్ ద light we see, the so many colors have changed for me over the time journey. Very good, Madhu. If you are going and again with the sadhanas, okay, so you will can see the so many things, right? So we have that power. So what is that power? First we need to imagine. पहले बाद में वो रियलिटी में आ जाएगा, मीन्स ऑलरेडी देर. तो निकोला टेस्ला का भी वैसी है, राइट? इन आवर चाइल्डहुड वी हैव दी सो मेनी hallucinations. फॉर एग्जांपल hallucination का कैसा होती है? इफ समवन हैज टेकन द ड्रग फॉर एग्जांपल, राइट, गंज का, ठीक है, तो वो बाद में कैसा होता है? एक नशा जैसा, राइट? मीन्स एक hallucination, कुछ इधर नहीं है बट वी कैन थिंक लाइक दैट इट इज देयर लाइक दैट. ओके. In NLP and in psychologically also they can use the hypnosis process to heal some diseases, to heal some broken relationship का भी वो heal करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं. ठीक है. तो what will be happen here? So one of the very important thing is that is to your nervous system. ये वाला बहुत important है क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ ही हमारा पूरा ट्रिगर होती है. बॉडी का पेन है या हीलिंग है फिजिकल बॉडी में, बिकॉज दे आर द ट्रांसमीटर्स है. एक जगह से और एक जगह पे इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए है. तो व्हेन यू आर रेडी टू give this imagination power, ठीक है, so what you are creating, you are again and again you are sending your imagination power. This will be applied in both positive and negative because energy don't know. For example, if you have the one form, ठीक है, you are sending the water in form. We have the weeds. Okay, ఒక పొలం ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ పొలంలో కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి, మనకు కావలసిన మొక్కలు కూడా ఉంటాయి. తోటమాలు కానీ మనం కానీ వాటర్ పెడుతున్నాం అనుకోండి, వాటర్ ఇస్తే ఎనర్జీ కాదు. ఓకే, ఓన్లీ కలుపు మొక్కలకి వెళ్ళకుండా ఓన్లీ మంచి మొక్కలకి వెళ్తుంది, అలా వెళ్ళదు కదా ఎనర్జీ. అన్నిటికీ ఈక్వల్ గా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, కలుపు మొక్కల్ని తీసేస్తాం. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ అప్లైడ్ హియర్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్. Okay, so that's why clear thought process is the very important thing. So that's why we are doing so many sadhanas, so many things, because we need to achieve that clear thought process. Okay, so ये laboratory in our mind, क्योंकि एक laboratory इतना बड़ा है. Just to close your eyes, you can think like that. In your brain, you are in very deep forest, right? And you are the all of you are science student, right? We know that the conical class कैसी होती है, lab कैसी होती है, right? टाइटर कैसा होता है, एवरीथिंग. सो इफ यू आर इन्वेंटिंग समथिंग, ओके, फॉर एग्जांपल you are inventing some pill type or maybe something that will give the immense power to heal the plants, heal the pets, like that also. So like that, if you have the in your brain, you have that power to create the anything. तो निकोला टेस्ला ने कितना सारा इन्वेंशन किया था, कितना सारा देख लीजिए तो कुछ थोड़ा ही दिया था. करंट मोटर, राइट, एंड रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट, कितना सारा है. निकोला टेस्ला इज चेंज होल वर्ल्ड. ऑलरेडी इज देयर इन आवर उपनिषद, इन आवर वेद, ऑलरेडी देयर, बट उसका एक फिजिकल फॉर्म में है ना. नाउ वी आर यूजिंग एवरीवन ऑल दीज पेटेंटेड इन्वेंशन.
ठीक है, मोर देन 300, देख लीजिए, एक ही निकोला टेस्ला ने पेटेंटेड वो है। तो कितना इमेजिनेशन पावर यूज किया है। सो वो भी ह्यूमन है, वी आर आल्सो ह्यूमन, राइट? So why we are not using our imagination power? Because in before we have the so many conflict, clear thought process नहीं है। One of the main key to किसी का imagination अच्छा नहीं होती है। 42 days to 61 days completely daily guided meditation करना है 20 minutes का। डेली आप करते जाओ, कुछ भी पहले यू आर नॉट सिटिंग, इट्स ओके। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वो करते जाना है। सो देन वी आर ओपनिंग अवर थर्ड आई प्लेस। तो थर्ड आई का प्लेस ओपन होती है, देन ओनली वी कैन हैव दैट क्लियर, क्योंकि इधर से ही है ना हमारा ऑब्जर्प्शन जो भी होती है। मीन्स हियर वी हैव दी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टेन सम जूस, ओके, तो उसका जो फाइबर होती है स्ट्रेनर में, वो कैसा होती है, ज्यादा हो गई तो नीचे आ जाती है, जूस नहीं है ना। सेम थिंग हैपेंड इन आवर थॉट प्रोसेस, इधर पूरा फिल्टर करके करके एक होती है। एंड वन ऑफ द रीजन इज फ्लोरेसेंट वाटर आल्सो। फिजिकल भी कुछ होती है, हमारा पीनियल ग्लैंड को ब्लैक करने वाला ये वाला है, मेन पीनियल ग्लैंड पे होती है। ठीक है, उसको ब्लैक करने वाला क्रिस्टल्स भी होती है, तो फूड भी होता है। ठीक है, इसके वजह से भी वो वाला क्लोज होती है वो एरिया। ठीक है, वन ऑफ द रीजन है। वैसे निकोला टेस्ला ने इतना सारा इन्वेंशन किया है। सो लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर, राइट? कितना ब्यूटीफुल है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल स्टेप है। सो इफ यू आर यूजिंग समथिंग ना, इफ यू हैव कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ टू टेकिंग द डिसीजन, जस्ट गो टू द बोर्ड, आपके घर पे तो हो गया, अदरवाइज यू कैन टेक द पेन एंड पेपर, जस्ट राइट ए एंड डैश बी। ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट यू हैव सम लिमिट, इधर से इधर है, बट इफ यू कैन रिमूव दैट बी, so it is going everywhere, right? It is going to the multi-dimensional place because you have that imagination power. तो उसका अनलिमिटेड होती है, बट व्हेन वी आर यूजिंग द लॉजिकल ओनली इट विल हैव द लिमिटेड। सो ये वाला एक प्रॉप है, ग्रेटिट्यूड में एक प्रॉप है। बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग ग्रेटिट्यूड टू योर फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल already है, we are giving gratitude to sun or maybe everything, so that already we are experiencing in our life, but in future के लिए तो imagination compulsory needed है, right? Without imagination, अगर आपको imagination नहीं आ रही तो first you can you start to give the gratitude to your future. Slowly you can add the gratitude. For example, if you are doing the restorative yoga, किसी का सर्वाइकल स्पाइन है तो वो योगा छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर एक प्रॉपर योगा ट्रेनर है, एक प्रॉपर योगा टीचर है, कोई भी कंडीशन में योगा करवाते हैं। ठीक है, उसका प्रॉप्स होता है बहुत सारा, बहुत सारा अलग अलग तरीका होती है उसको पर्सन को बेटर, सेम मसल को बट इन डिफरेंट वे में कैसे मुझे स्ट्रेच करवाना है, राइट? वो एक प्रॉप्स होती है। वैसे ही इमेजिनेशन के लिए भी वी कैन यूज लूज वेट है, बेटर बॉडी है, तो वैसा बहुत सारा चीज, लाइक फॉर एग्जांपल विजन बोर्ड है, एक वन ऑफ द प्ले है, दैट इज द वी कैन स्टिक वन फोटोग्राफ, आपका 10th क्लास का है या 11th का है, अदरवाइज आपका अभी का है, ठीक है, वो वाला एक स्टिक करना है, दैट इज द वन ऑफ द प्ले है। वैसे 2 to 3 प्लेस में आप चिपका के रख सकते हो लूज वेट के लिए, बाकी सब कुछ कर रहे हैं बट सबकॉन्शियसली यू आर फीडिंग आपका ब्यूटीफुल फोटो 2 to 3 वैसे स्टिक करके रख दीजिए आपकी बेडरूम में वैसा। तो वेन एवर यू आर मूविंग इन दैट प्लेस ना, वाव यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू माई आइडियल ब्यूटीफुल हेल्दी बॉडी, आई एम एंजॉइंग विथ माई बॉडी। ठीक है, आई एम डूइंग these things, आई एम कुकिंग or maybe आई एम डूइंग yoga or maybe आई एम enjoying and I'm looking so beautiful in this outfit. Like that you can add, means you can take as a play, गेम की जैसा बच्चों की गेम होती है ना, हाइड एंड सीक लाग, वैसा ये गेम है, आपको मोड पे होती है ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अदरवाइज ये क्यों होगा, वैसे सोचेगी तो हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा। सो दैट इज द लॉजिकल ब्रेन है। तो बिकॉज यू मस्ट इमेजिन दोज बॉडीज आर यूअर्स। ठीक है, लूज वेट के लिए ये दिया था रोंडा बर्न ने, बट फॉर एवरीथिंग इट इज अप्लीकेबल, आपका बच्चों के लिए है या आपके लिए है। सो यू कैन यूज द विजन बोर्ड, वन ऑफ द प्ले गेम है, वैसे बहुत सारा अलग अलग तरीका होते हैं, बट सिंपल इजी वे है ये वाला है।
if you are एक finish हुआ है ना मधु, if you are overweight or underweight, hmm, you would walk differently, talk differently, and you would do things differently. और आपका वेट अचीव करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो अब यू कैन नाउ फील दैट सेंस। अगर आपको वेट कम होने के बाद आप अच्छी तरीके से बेंड कर सकते हो, तो अभी यू कैन एक्ट, मैं कैसे बेंड कर सकती हूँ, ठीक है। एंड अदरवाइज इफ यू हैव द ब्यूटीफुल एयर और मे बी ब्यूटीफुल बॉडी, सो यू कैन एक्ट। आपका कोई अच्छा डिजाइन वाला ब्रेड बनाना है, हेयर स्टाइल, तो वो करने के बाद हाउ यू आर फीलिंग, वो वाला अबे ऐड करो ना, बिकॉज इमेजिनेशन है, अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर आपको साड़ी पहनना है फॉर एग्जाम्पल, सो वो पहनने के बाद हाउ यू आर फीलिंग ना, राइट, सो वो वाला फील दैट, ये वाला फीलिंग में क्या होती है, दैट इज द लव फोर्स है। आप तो फोर्सबली यू आर एडिंग दैट लव वो चीज में, बिकॉज यू हैव द क्लैरिटी, ठीक है। वैसा एवरीथिंग एवरीथिंग आपको, बिकॉज दिस इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू कैन गिव कैन रिसीव, ये वाला है, इसलिए यू नीड टू बी एड। एंड लैंस आर्मस्ट्रांग, अर्नल्ड सिजवर का ये all these played. Mother, can you start from here? Okay, maybe Madhu is out. Okay. So మేడం మధు Nico, పక్కకి వెళ్ళింది ఇప్పుడే. okay. Should I read? Ah, yes, yes, definitely. Oh, Komali is here. Okay, she'll read. Read from the place where it's highlighted. Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, all these people played with their imagination and felt their dreams with all their heart. Their imaginings became so real to them, they could feel their dreams and know they would happen. It doesn't matter how far away your dream seems to be to you, it is closer to you than anything in your life. Because all the power to bring your dream to you is inside you. Everything is possible for the person who believes. Jesus, circa 5 BC to circa AD 30, founder of Christianity in Mark 9:23. In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically perform the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it's real. If you're talking about something in the past or the future, you're imagining those things now. You're feeling those things One second. Hmm. now. You're on that frequency now. And that's what the law of attraction is receiving. When you're imagining your dream, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency that your desire is on. And to get onto the same frequency as your desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what you desire appears. All you can possibly need or desire is already yours. Call your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled. Naval Goddard, Naval Goddard. Seville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. When you Thank are you, Kushali. Thank Komal. you for it. Komali? Okay, thank you for beautiful reading, Komali. Thank you, ma'am. A real new energy from Komali. So all these are Nikola Tesla and Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger. All these people are used the imagination. And all of you know that we have the in our body, in our brain, we have the neuroplasticity and the mirror cells. So what are the mirror cells? So if you are imagining something,
सो दैट इमेजिनेशन मिरर के कैसी होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, राइट? सेम थिंग, दैट इज द डुप्लीकेट होती है. So when you are imagining, you are creating the duplicate cells in your brain. इतना सारा कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन का. तो आपको कुछ भी चाहिए ना, सो फर्स्ट यू कैन सिट एंड एटलीस्ट 7 सेकंड टू 7 मिनट्स तक आप इमेजिनेशन कर सकते हो. How you are going to be imagine add the feeling. For if you want to, Komali want to the beautiful one pink gown or maybe one yellow color gown. Okay, so maybe she have the certain qualities about the dress के लिए वैसा है, flower होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए. For example, she have. But when she is using like that in her visualization process, like she is visualizing and mama photos ले रही है, पापा photos ले रहे हैं, otherwise she is roaming, कुछ प्ले कर रही है एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एवरीवन इज admiring her beauty, right? And she is very comfortable in that clothes like that. If you she is adding these imagination power, what she is creating in her brain, she is creating the mirror cells. ये तो पूरा completely science है. ठीक है, we are creating the mirror cells. After that, again and again, if we are doing the again and again, what we are doing, we are creating that neuroplasticity. Neuroplasticity means duplication को उसको continue कर रही है when it comes into our reality. Maybe Komala will receive that beautiful race if she is believed, maybe next day or maybe next 1 month also, because that is depending on how she is believing and how she is there in that frequency. एक दिन imagine किया and she is believed, बाद में भूल गए थे, तो उसका आने की चांस बहुत कम होती है. बट अगेन एंड अगेन शी इज गिविंग दैट फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि मिरर सेल्स फॉर्म हो गई है, बट उसको एक से एक जुड़ना चाहिए, प्लास्टिसिटी होना चाहिए, देन ओनली इट विल कम इनटू द रियलिटी. बट बच्चों के लिए वैसा होती है ना, दे डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट एनीथिंग, तो कुछ ऐसा नहीं होता है, so they will receive very quickly. But when we are in the social conditioning, we can add so many doubts. Logical brain का ज्यादा होती है, मे बी मनी का है या शॉप का है या अभी बजट नहीं है, लाइक दैट. तो इधर बिलीव है, बिलीव से क्या होती है, वी आर क्रिएटिंग दैट इमेजिनरी मिरर सेल्स का क्रिएशन होती है. So like if you want something, add that mirror cells का power activate करना है. You need to be create those mirror cells again. One second. So you need to be create those mirror cells. तो अभी भी जो भी है, you are have the dream vacation, ड्रीम प्लेस, मार्क्स है, राइट? बच्चों के लिए मार्क्स का होती है, पेरेंट्स का ग्रेड है, या एनीथिंग रियल. इफ दे आर इन द 7 ईयर, 7 ईयर्स हो गई है, 7 ईयर से है 6 ईयर्स, सबसे उन लोगों का इमेजिनेशन की एक ऐड कर दीजिए, विजन बोर्ड एंड एवरीथिंग. यू कैन लुक एट उन लोगों को 12 तक दे आर इन द मास्टर्स, वो लोग किसी और के लिए टीच कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ बिलीफ. उन लोगों का एक्सपीरियंसेस भी वैसे ऐड होती है. And so that's why doing the activity is very important and practice is the very important thing. And you are talking about something in the past or the future, you are imagining those things now. अगर किसी का बहुत बैड मोमेंट है, तो इन इनर चाइल्ड आल्सो आई हैव गिवन द एग्जांपल, पिक्चर विथ इमेज होती है, इमेज विथ फीलिंग होती है, कुछ चीज ओनली इमेज होती है विदाउट एनी फीलिंग. वो वाला बहुत डीपली अंदर जा चुका है. अभी भी कुछ याद करेगी ना, उन लोगों को पहले उन लोगों को फेस याद आता है, अदरवाइज दे हैव द सम पिक्चर और मे बी सम मोमेंट सम सिचुएशन होती है ना, दैट पर्सन हैव द मोर पेन. अगर उन लोगों के साथ वर्ड्स भी याद आ रहे हैं ना, उन लोगों का थोड़ा कम है लेवल लेवल ऑफ पेन. ठीक है, बिकॉज इमेजिन जो पिक्चर होती है ना, उसका ज्यादा पावर होती है एंड दैट विल एंटर सबकॉन्शियसली वेरी डीपर लेवल में जाके ब्रेन के अंदर वो पूरा वैसा होती है ना, एक प्लेस में स्टिक होती है, बिकॉज दैट ऑलरेडी क्रिएटेड द मिरर सेल. को रिमूव करना है तो फिर हमको रिवर्स एक्टिविटी करना पड़ेगा, दैट इज वी कैन एक्टिवेट अंदर मिरर सेल. ठीक है, सो ऑल यू कैन पॉसिबली नीड और डिजायर इज ऑलरेडी यूर, ये बिलीव करना पड़ेगा सबको, इफ यू वांट टू बी
बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलरेडी है मेरे अंदर, वैसे आपको बिलीव करना पड़ेगा. कॉल योर डिजायर्स इनटू बीइंग्स ऑफ इमेजिनिंग एंड फीलिंग मी विथ योर विश फुलफिल. नेवल गोडार्ड का है, ठीक है. अभी तक आपने जितना भी लिया होगा उसमें 80% वी कैन रीड द फीलिंग इज द क्रिएशन बुक में से होती है. 1933 में ये पब्लिश हुआ था ये बुक, 1933 में, राइट. उसका अभी 2000 के बाद ये बुक के ऊपर ज्यादा रिसर्च हो गई, तो देख लीजिए कितना इयर्स वो ऑथर ने जब किया था ना, नेवल गोडार्ड ने. बट अभी इसका ज्यादा हो रही है बिकॉज उसमें इतना पावर है, उसने लोगों के साथ वर्क किया है, ने प्रूव किया है बहुत ही एक्सपेरिमेंट. बट वो टाइम पे नो बडी विल एक्सेप्टेड है, तो जादू की जैसा है, कुछ होगा वैसा, बट इट्स ए प्योर साइंस. ठीक है. जिसना मिरर सेल्स का वो वाला इन्वेंट हो गई, न्यूरोप्लास्टिसिटी का इन्वेंट हो गई, सो अगेन अलग से वो विद द नेवल कोडर का बुक में जाके फिर कंपेयर किया, सो इट इज ट्रू लाइक. तो देन उसका बहुत ज्यादा हो गई है विजुअलाइजेशन की जो भी होती है ना एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन टेक फ्रॉम द नेवल कोडर की में से लेते हैं. So when you are really excited about anything that has happened and feel amazing, capture that energy and imagine your dream. एनर्जी को भी कैप्चर करना है. एनर्जी कैप्चर मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग और मे बी यू आर परचेजिंग समथिंग इन ये शॉप. ठीक है. वो वाला शॉप में से परचेज कर रहे हैं ना, व्हाट इज दैट यू आर फीलिंग. वो एनर्जी हैप्पी मोमेंट की जो फीलिंग होती है, हाउ वेरी हाई लेवल ऑफ फीलिंग होती है, वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, लाइट अप एनर्जी. whenever you can feel happy, आपका aura इतना वाइब्रेट होती है, that is going to be vibrated, very vibration होती है, but without very minute weight. But if you are feeling sad, your aura will become like this, and that will have the so much of weight in your etheric body. आपका प्राणमय शरीर में इतना वेट ऐड करती है ना, दैट्स व्हाई यू कैन फील लाइक दैट आई एम कैरिंग सो मच ऑफ वेट. हमारे बॉडी के अंदर बहुत वेट कैरी कर रही है, because already you have our thoughts have weight na, so in sad feelings we have the much weight, and happy feeling, joyful feeling, we have the very light weight होती है. ये वाला एक difference है. whenever you are feeling anything ना, observe your body, just observe. Now what is my thought process, whether I am feeling light, whether I am feeling heavy. Heavy है तो that is the negative feeling, light है तो that is the positive feeling. Okay, so this is the fun activity, and this is the joy of creating your life. Every time, just you can use so many props like vision board का है. कोई आपका गार्डन कुछ क्रिएट करना है तो यू कैन टेक वन गार्डन का क्रिएशन कर लो आप भी. एक पिक्चर देख लो आपको कैसे गार्डन क्रिएट करना है, राइट. एनी नेचर सोर्स अगर आपको क्रिएट करना है ना, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली वन एनर्जी. अगर आपको क्रिएट करना है तो बहुत सारा एनर्जी को कैप्चर करना पड़ेगा, है. सो नेचर चीजों के लिए, बट विथ योर पर्सनल वर्क, आपका पर्सनल के लिए तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, एडिंग द मोर फन. विदाउट फन इट इज गोइंग टू बी बोर्ड, बट इफ यू आर एडिंग फन ना, इट इज लाइट अप योर फीलिंग एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो. तो दिस इज द की टू द की ऑफ लव. तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देन वी आर एंटरिंग इनटू द ब्यूटीफुल मनी का अंदर एंटर होंगे कल. तो कोमली. Should I read now? हाँ ये. The key of love. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. See only love, bear only love, speak only love, and feel love with all your heart. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You're made of love. Tell the law of attraction what you love every day by singing out the things you love and feeling them. To change the way you feel or to lift good feelings higher, make a mental list of everything you love and adore. Your job is to love
as much as possible every day. Make a conscientious effort to notice as many things around you that you love as much as you can each day. The key of gratitude. Every time you feel grateful, you are giving love. Be grateful for everything you have received in your life for the past. Be grateful for everything you are receiving in your life for the present. Be grateful for what you want in your life as though you have received it for the future. Your gratitude will multiply everything in your life. Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love. To use the power of gratitude, practice it. When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is, say thank you. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. The key of play. When you play, you feel really good, and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. Life is supposed to be fun. The law of attraction doesn't know if you are imagining and playing, so whatever you give in imagination and play will become real. Whatever it is you want, use your imagination, use every prop you can find, create games and play. Act as if you have it now. Whatever you imagine with the feeling, you are giving to the law of attraction and you must receive it. If you experience a delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency as your desire. When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. Thank you, Madhu. Thank you so much. Okay, so in this chapter, we have the three key points. Just list out, make in your mental list. Mental list क्या होती है? आपको जो पसंद होती होगी, right? वो वाला सब list out कर लीजिए mentally. Mentally, when you are list outing, na, so when you are feeling any sad or anything, just you are jumping into that positive force of love. अगर आपको कुछ बहुत तेलुगु गाना कुछ बहुत पसंद है, right? तो वो वाला आप मेक लिस्ट कर दीजिए, आपका ब्रेन को एक इंसिस्ट दे दीजिए, आई हैव दिस, जस्ट क्लोज योर आइज एंड डिवाइड योर सेल्फ, राइट? फ्रॉम नेचर आई लव, from oceans I love, right? From trees I love, these flowers I love, these sweets I love. Like that, make a list and just keep in your mental note. And you can use the gratitude, second thing. ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड उसको ग्रैटिट्यूड को कैसे लेके जाना है, लाइक ए प्ले मोड, बिकॉज अवर सबकॉन्शियस माइंड डोंट नो वेदर यू आर फीलिंग राइट नाउ और मे बी दैट इज द फॉल्स और दैट इज द ट्रू. दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग सो मेनी डिसीजेस, सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ. बहुत सारा फेक हम लोग सोच सोच के उसको रियलिटी में लेके आते हैं, बट नाउ वी आर डूइंग द अगेन रिवर्स गेम. ठीक है, जो नहीं है उसको हम फेक इट, वो फेक इट कर रही है थ्रू द इमेजिनेशन. तो अभी तक हम लोग ने ये 3-4 चीज में बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है. तो नाउ टुमारो वी आर एंटरिंग इनटू द पावर ऑफ द मनी. मनी का रीजन क्या होती है, उसमें डीप में जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी बिकॉज द फोर्स ऑफ लव को क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग इन आवर लाइफ. So any key points from this chapter, if you want to, you can share some points, key points or anything. So no key points. So just Exercise, can you please? exercise, Maha. Okay. So just sit down in a peaceful place, okay, and close your eyes and divide for yourself what you love in your life. For example, just think in your mind from the nature what I love. Maybe you love the sky, right? Open sky, I know you, Yes. right? सो आपको वो देखने के बाद इतना लव आती है कि यू हैव दैट मच ऑफ फोर्स ऑफ लव, राइट? You feel very Yes, happy without any reason, right? You don't have any yes, reason to be happy to see those things.
वैसे आपको जो पसंद होती है, जो लव कोर्स है, उसको मेंटली लिस्ट आउट कर लो, फ्रॉम मूवी, फ्रॉम सॉन्ग्स, फ्रॉम जोक्स, फ्रॉम maybe some actor. You will get motivated to see those actors, or maybe actress, or maybe any inspiring person. Like that, you can make a dishes list. Okay, maybe you love some sweet. Without any reason, you love that sweet, right? Like that. So you have, maybe you will find 5 to 6 or maybe 10 also. Just keep the mentally list. And how we can use in a play game, right? So when you are feeling anything, na, because we want to create beautiful life in our life. जो अच्छा नहीं हो रही, it's okay, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा that moment also. Just you need to be gem that moment. क्यों क्यों जब करना है? Because हमको फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं जाने देना है. नाउ यू आर डूइंग वन विजन है आपका, 1 ईयर के गोल है. ये छोटी छोटी बातों के लिए आपका फ्रीक्वेंसी, भाई वी कैन गो डाउन दैट फ्रीक्वेंसी. हमको क्यों जाने देना है फ्रीक्वेंसी को? नहीं. सो व्हेन यू कैन सब्स्टिट्यूट, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट करना है ना. ठीक है. वो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? विद द गुड फीलिंग्स. आपको जो भी है वो गुड फीलिंग को सडनली यू कैन ऐड दैट गुड फीलिंग. ठीक. Okay. अभी स्काई अवेलेबल नहीं है. यू आर इन अ बेडरूम फॉर एग्जांपल, स्काई ऐड नहीं है, बट यू आर एडेड लिस्ट इन यूर मेंटली, बहुत ज्यादा ऐड किया है. सो जस्ट क्लोज योर आईज आल्सो. नो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्काई आल्सो, यू विल गेट दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर लिप्स. Yes. आपको जो फीलिंग आती थी वो फीलिंग अभी भी आ जाए. सो विद द 7 सेकंड्स, ओके, 7 to 42 seconds में हम एक टाट को उसको रुक सकता है, राइट? So we are giving this ना, so automatically we are reducing that frequency. उसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम कर रहे हैं. जो ज्यादा होने वाला है ना फ्रीक्वेंसी, उसको हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली we are reducing. After 1 hour, if you can think that that time moment ना, so you can feel like that this is a very silly, but why I am thinking that much. But वो टाइम आपने जो क्रिएट किया है वो अभी याद नहीं होती है ना, लाइक दैट. Okay. Okay, so these are the props. Imagination, gratitude are the props. So it's a beautiful, simple thing, but very beautifully narrated. इसलिए बुक का इतना अच्छा होती है. ठीक है. So thank you for reading once again, and thank you everyone for joining today's session. And just I'm going to end the live. And who are feeling what about the session, just comment in YouTube, because it will help to someone. Really, helpful many people. Alright, because we also read the comments and we are also entering into the session.